हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेशन। एक सेशन फोरेंसिक मेडिसिन का जहां पर हम नीट पीजी, INI-CET एंड FMGE एग्जामिनेशंस में आने वाले फोरेंसिक मेडिसिन के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इन अ बेटर वे एंड वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड what kind of questions come in our examinations and how to answer them. अ, इसी श्रृंखला में आज हम एक PYQ या फिर एक MCQ कहा जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। काइंड ऑफ MCQ which is very commonly asked in the examination. The MCQ is a picture based MCQ as you can see on your board, and the simple question that has been asked is the type of wound that has been shown in the image is. The options are defense wounds, hesitation cuts, self-inflicted cuts, or post-mortem wounds or post-mortem cuts. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि हमें इमेज में दिख क्या रहा है, so let's try and see what exactly we can see in the image. We can see in the image that there are cuts on fingers and palmar एरिया। तो हमें फिंगर और पामन एरिया पे कट्स दिख रहे हैं। वी कैन सी कट हेयर, वी कैन सी कट हेयर एंड वी कैन सी कट्स बीइंग प्रेजेंट ऑन दी फिंगर्स ऑल्सो। जहाँ पर कट्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर मैंने एरो का निशान दिया है। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे साथ में। इन चारों ऑप्शंस में के क्या मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस होते हैं, कैसे इन चारों ऑप्शंस में हमें इंजरी दिखाई देती है, पहले वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफेंस वुंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल सी चीज़ समझेंगे, डिफेंस वुंड्स होते क्या है। द वुंड विच कम ओवर ऑन टू द बॉडी while a person is defending himself from an attack. सिंपल, यानी कि अपने आप को एक अटैक से डिफेंड करते हुए जो कट आया बॉडी पे वो डिफेंस वुंड है। अब अगर वेपन ऑफ अटैक जो है वो एक शार्प वेपन है, ठीक है, तो उसके डिफेंस के समय में बॉडी का ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा, दैट यू विल वांट टू पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड इन एन अटेम्प्ट टू पुश द वेपन अवे, राइट, और मे बी एन अटेम्प्ट टू ग्रैब द वेपन। ठीक है, तो आउटकम क्या होगा, तो डिफेंस वुंड में अगर शार्प वेपन है तो आउटकम क्या होगा, आउटकम होगा कट्स ऑन फिंगर्स एंड पाम, राइट। पर मान लीजिए अगर अटैक का वेपन जो है वो एक शार्प वेपन नहीं है, वो रादर एक ब्लंट वेपन है, तो व्हाट डू वी सी इन ब्लंट वेपन। so if it is a blunt weapon, the normal reaction of defense in of body in blunt weapon attack is flexing of the forearms in front of the face and chest. As a result, the blows are going to be on the flexor extensor aspect of the forearm, resulting in bruising, laceration of forearm and fracture of forearm bones. सो ब्लंट वेपन के अटैक में ये डिफेंस वुंड्स हमें देखने को मिलने की उम्मीद है, राइट। हेजिटेशनल कट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, हेजिटेशनल कट्स आर सीन इन सुसाइडल इंजरी, राइट। होता क्या है, कंसिडर somebody who is trying to commit suicide and he is holding a sharp weapon close to let's say a neck vessel. He does not have the courage to give the first as the decisive cut. So holding on that weapon close to the neck, he hesitates a while. During that period of hesitation, he unknowingly ends up giving superficial multiple cuts in the beginning of the decisive cut. Those are called as hesitational cuts, indicative of suicide.
तो हेजिटेशनल कट्स हमें कब मिलेंगे? सुसाइडल इंजरी में मिलेंगे। और इनका कैरेक्टर क्या होता है? दे आर मल्टीपल, दे आर superficial cuts in the beginning, right? Self-inflicted injuries क्या है? Injury which a person inflicts on his own body with a purpose or motive of blaming somebody else. यानी कि वो इंसान अपनी बॉडी पे खुद इंजरी करेगा, बट उसका मोटिव क्या है? किसी और को ब्लेम करना। तो वो कहाँ पर करेगा ऐसी इंजरी? जो कि इजी एक्सेसिबल एरिया है बॉडी के, जो नॉन वाइटल एरिया है बॉडी के। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सीन ऑन easy accessible non vital area of body। ठीक है, ये कैसे होंगे? even they will be multiple because he will end up at least cutting his own body number of times. One single cut is not good enough for somebody to be blamed, right? फिर कितना डीप काटेगा वो? he will end up cutting very superficially, so they are expected to be superficial and unidirectional। और डायरेक्शन कैसे पता चल जाती है कट में? उसकी टेलिंग की वजह से, राइट? सो इफ द पर्सन इज राइट हैंडेड एंड लेट्स से ही इज कटिंग हिज flexor aspect of the left forearm to self inflict his own body, the best way of cutting is giving horizontal incisions on the forearm, right, from lateral to medial aspect. Okay, it's easy to do it. So all of them will be unidirectional. So if these are the findings, you go in favor of self-inflicted injury. And post-mortem cuts, what are post-mortem cuts? Post-mortem cuts are those cuts which can come on the table of post-mortem, right beneath the nose of the autopsy surgeon, and they can be provided by the autopsy helper while the autopsy helper is preparing the dead body for autopsy examination by the autopsy surgeon. The autopsy helper cuts the ligatures tying the wrist together. The autopsy helper cuts the ligature tying the ankle together. The autopsy helper may cut the clothing present on the body, so that now the body is available for the autopsy surgeon for his inspection. During the cutting of those ligatures and clothing, the autopsy helper may end up giving small cuts either on the wrist or around the ankles or on the front of the body, which are called as post-mortem cuts or post-mortem artifacts. So post-mortem cuts में हमें क्या finding मिलेगी? We can see a single cut on wrist or ankle or probably front of body while cutting the clothing. Okay, so these are 4 scenarios: defense wounds, hesitational cuts, self-inflicted injuries and post-mortem cuts, where cuts can be present on the body, but इन सभी के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इन सभी की अलग अलग पोजिशनिंग होती है, इन सभी की अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है। ये प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। Now if we come back to our question, what do we find? That there is a photograph which has been shown where cuts are present on finger and palmar area, and these cuts go in favor of, you can answer this along with me, they go in favor of option number A, defense wounds, right? This is how we understand forensic questions better. I'll see you in another session. Stay tuned to this channel. Stay tuned for forensic updates.